Okay, so we have who is Vipul here? Okay, so we have completed the कल का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया? कल का लेक्चर देखा आप लोगों ने? हाँ? So we have completed the general characteristics. We have started the molluscs, of course. We have completed the general characteristics and the phylum classification of the mollusca. ठीक है? In the mollusca, there are mainly two things very important overall. एक आपका respiration है. Although the feeding habit और भी है, because of that, what is the specific character of the molluscas? Radula. Radula is your rasping organ. Yes, feeding organ. ठीक है? So what we have said in then initially that whatever the important characteristics of any phylum, generally UPSC asks the question from that only. Okay? Generally UPSC asks the question from that only. So first we're going to talk about that torsion and torsion. If the topic will be completed, then we will go to that feeding habit. Okay? Let me just upload the PDF one. Good afternoon, Manish and Rohit. देखो, so what happens? Torsion is one of the process in that development. ठीक है? Twisting and coiling is a simple physical phenomenon. ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? जैसे कि suppose that you have a rope. ठीक है? Rope को हम लोग क्या करते हैं? इसे twist कर देते हैं. But when we talking about the torsion में क्या होता है? Except, okay, so what is the difference? Like how that body of the mollusca is differentiated? The body of the mollusca is differentiated between that head and the anus, and this is called the mantle cavity. Because initially when we talking about that general characteristics, we have mentioned that cavity is not that, cavity is actually merged with that internal features. ठीक है? So ये आपका और होता किसमें mainly आपके जो भी classes division है उसमें आपका गैस्ट्रोपोडा है. ठीक है? गैस्ट्रोपोडा है. तो एक नॉर्मल एनिमल है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ओके, सो ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट हाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद दैट प्रोटेरोस्टोम और डिटोरोस्टोम? या सिंपल किसी भी ऑर्गेनिज्म में व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट वी से दैट द गट सिस्टम हैज दैट टू ओपनिंग, right? That proterostome and deuterostome, one is called anterior, one is called the mouth, and the posterior one is called that anus for that ingestion or egestion. ठीक है? So यही process क्या होता था? इसमें भी होता था. Molluscas also has the same process, but in the gastropod class, the gastropod is the class of the molluscas. During that development, if you want to see it here, during that development, देखो ये वाला structure दिखाई दे रहा है, ये वाला structure दिखाई दे रहा है, first one. It is actually full complete process of the torsion. ये initial है, before torsion process. I'll tell you how to write the answer when the torsion question generally comes. It comes almost every alternate year. ठीक है? तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? That green lining is your gut system, gut canal दिया. ठीक है? एक external opening है, that is called the mouth, and the second external opening है, that is called that anus. ठीक है? ये structure मतलब ऐसे represent किया गया, ये दूसरा end है. But what is the torsion process? In the torsion process, there is a rotation of that gut canal system at the 180 degree, at that 180 degree. ठीक है? 180 degree जब rotate करती है, so actually mouth is presented at their own position, but जो आपका anus है ये इस तरीके से it rotates like in this way, that first it will rotate in that 90 degree, second it will rotate in that next 90 degree. ठीक है? तो देखो इसमें क्या हो रहा है? ये आपका स्ट्रेट लाइनिंग है, 180 स्ट्रेट लाइनिंग है. ये आपका देखो यहाँ पे आके ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया. ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग एक और 90 डिग्री फोल्ड करेंगे, जैसे कि अगर सपोज दैट ये आपका 180 डिग्री की लाइनिंग है, एक स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ऑफ द 180 डिग्री. ठीक है? इसका सपोज दैट हम लोग अगेन 180 डिग्री डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स अ माउथ एंड एनस. सो दैट मींस ये आपका ऐसे रिवर्स आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द 180 डिग्री. ठीक है? तो यही पोजीशन इसमें हो रहा है. फॉर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए first this will rotating, this straight line will be rotating like this. ठीक है? And then it will rotating like यहाँ से फिर again 90 degree rotate हो रहा है, that is called that 180 degree. The various region like various scientists have said that किस region से होता है, किस region से नहीं होता है, but actually
whatever the changes occurred in that environment or during the evolution. If it is accepted and continuing in that next or the forward area, that means it is something very important and fruitful. That means it is something important and very fruitful for the kind of development. ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट ये हुआ बिकॉज ऑफ इनिशियली क्या था, माउथ और एनस वाज अ वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो उसको ट्रैवल करने के लिए एक बहुत लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करनी पड़ती थी गट, बट द मोलस्कास बॉडीज आर द वेरी शॉर्ट, very complex, and they are having that big shell and something like that. So it is a kind of development for that efficient process. देखो ये आपका फाइनल स्टेज है. फाइनल स्टेज मतलब इसी का ये इसको एक्चुअली ये वेंट्रल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, एंटीरियर पोस्टीरियर फॉर्म में दिखाया गया है, इसको कंप्लीट बॉडी की फॉर्म में दिखाया गया है. देखो अभी यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज द माउथ एंड दिस इज एनस, ये आपका एक रोटेट होकर यहाँ पर आ रहा है और फिर ये 180 डिग्री रोटेट होकर माउथ और एनस की पोजीशन एक लाइन पर आ जाती है. ठीक है, एक्चुअली इसका रोटेशन इसलिए होता है बिकॉज जब ये 90 डिग्री रोटेट हो रहा है तो राइट पार्ट इज डेवलपिंग मच मोर अर्ली, मच मोर फास्टर देन दैट लेफ्ट पार्ट. सपोज दैट एक मास है या सपोज दैट कंसीडर लाइक अ बलून है, एक तरफ अगर दे विल बी द मैक्सिमम डेवलपमेंट कंपेयर टू द अदर साइड ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्वियसली जो आपकी गट सिस्टम होगी, सपोज दैट यहाँ पे देयर इज अ मैक्सिमम डेवलपमेंट एंड यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम डेवलपमेंट. So when this side of the muscle portion or the mental cavity, whatever the portion it is, when it is developing, it will enforce a certain kind of pressure on this gut system, right? As much as it will enforcing the gut system, this will start rotating like that, है ना? इसी तरीके से फाइनल आपको 180 डिग्री रोटेशन. ठीक, this will be covered through that diagram or whatever. If there will be confusion, then I'll explain it again. So right on, Torsion. Yes. It is useful for everything. Okay, initially what was happening, because these are the animals who are living in both kind of like moistured environment or the aquatic environment, and also the terrestrial habitat. Okay, so when we talk about that after the torsion, what is happening? First of all, the symmetry is completely changing. Okay, so why is the need of the symmetry? Why is the need of, सब कुछ तो सही चल रहा था, bilateral symmetrical thing है ना? What kind of symmetry it is? It is a complete bilateral symmetry. But due to the occurrence or due to the presence of the shell also how the shell is actually working. Shell is your rotated, a kind of coiled structure. If any animal is bearing a kind of coiled structure, it cannot carry the bilateral symmetry, because shell is now the part of that body which the animal need to carry on. ठीक है, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था. सेकेंड रीजन ये था कि जब कॉइल्ड हो गया तो फर्स्ट बायलैटरल सिमेट्री से सपोर्ट नहीं किया जा सकता. सेकेंड, द पोजीशन ऑफ गिल्स, नीडिया उसको बोलते हैं, टिनिडिया या नीडिया जो भी आप उसको बोलना चाहो. इंडिया इनिशियली क्या था, देखो आप इस पोजीशन में देखोगे, सो यहाँ पे आपका गिल्स, ये गिल्स लिखा है ना, और ये आपका माउथ है. सो इट वाज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक और दैट ओपनिंग. बाद में क्या होता है, ये पोजीशन जो होती है इसके ऊपर आके चेंज होके गिल, माउथ और गिल्स की जो पोजीशन, जैसे हम लोग का माउथ और नोज की पोजीशन, गिल्स आर फॉर द रेस्पिरेटरी, उसको ऐसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी गिल्स उसको बोलते हैं. So the significance is one of that, also significance that position of the gills. जैसे कि water when they are going into that moisture or that aquatic habitat, then the function of the gills will be proper in that kind of respiration. अगर इसका हम एक complete body structure दिखाने की कोशिश करें, if I try to show that, देखो इसमें ये गिल का स्ट्रक्चर दिख रहा है. सोचो अगर ये गिल का स्ट्रक्चर सिंपल हो और गिल का जो इंटरनल, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका जो स्टमक रीजन होता है, दैट्स वेरी बिग. अगर वो स्ट्रेट होगा तो वो गिल के और स्टमक को, जैसे कि व्हेन वी डू रेस्पायर एंड व्हेन वी डू इंजेस्ट, जब लोग खाना खाते हैं और जो रेस्पिरेशन करते हैं, अगर वो दोनों कैनाल बिल्कुल स्ट्रेट हो तो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम करती है. सो इतनी लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम को, सपोज दैट आपके पास इतना ही पोजीशन है, इतना ही बड़ा एनिमल है, यू कैन नॉट एडजस्ट अ वेरी बिग डाइजेस्टिव सिस्टम और द कैनाल इनसाइड दैट, बट यू कैन सिंपली एडजस्ट इट. यहाँ पे अगर आप इसको रोटेट करके रखने चाहोगे तो आप एक बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम एडजस्ट, ठीक है. पोजीशन ऑफ गिल्स, अ लॉन्ग डेवलप्ड gut system or the gut canal system, because they are having that big stomach and that intestine is also very folded form, so it is a very long, in that straight form it cannot adjust very easily. ठीक है. मेंटल कैविटी का भी है, मेंटल कैविटी जब प्रॉपर रोटेट होती है, इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉर्जन वी से that except that head portion and that tail portion or the below वाला portion, the full mental cavity rotate. ठीक है, इसके कारण write it down.
all the living mollusks, all the living mollusks except gastropods, except gastropods remain ancestral bilateral symmetry of the body, remain ancestral bilateral symmetry of the body with the mantle cavity. Mental cavity this portion, यहां से लगा के यहां तक का पोर्शन, या अगर इसको if you want to say like there, यहां से लगा के यहां का पोर्शन, this is your complete mental cavity. ठीक है, mental cavity lying posteriorly or laterally, or laterally, full stop. While the gastropods, while the gastropods possess an asymmetrical body, an asymmetrical body with mental cavity, with mental cavity lying anteriorly, lying anteriorly, and the shell and the visceral mass, and the shell and the visceral mass, visceral, visceral mass, coiled spirally, coiled spirally, and directed posteriorly, and directed posteriorly. Next, gastropods are generally believed, gastropods are generally believed to have descended, to have descended from an unsegmented, from an unsegmented bilaterally symmetrical ancestor, bilaterally symmetrical ancestor with a straight alimentary canal, with a straight alimentary canal, which change after the position, after the process of torsion, which change after the process of torsion. Stanza change. Torsion or twisting, torsion or twisting is a process, is a process during larval development of gastropods, during larval development of gastropods, which rotates the visceropallium, visceropallium. What is the visceral organs? Humans में हम लोग पढ़ते हैं ना, full visceral cavity or the visceral yesterday when we have talked about, then we have talked about the pallium complex. ठीक है, visceropallium, anti-clockwise, underline that, anti-clockwise through 180 degree, through 180 degree from its initial position, from its initial position, so that the mental cavity, the mental cavity with its pallial complex, with its pallial complex brought in front of the body in adults, in adults. Torsion is one of the very specific evolutionary development process. Torsion is one of the very specific
evolutionary development process of gastropods, of gastropods. Next, make the heading site of torsion. Where is exactly it is occurring? Site of torsion. Site or location. In the larval gastropods, only visceral mass, only visceral mass undergoes the rotation of 180 degree, whereas head and foot remain fixed. So the actual site of torsion is, look at here, the position of the mouth is not changing, even in this, है ना? So the actual site of that process is neck below the head portion, because mouth is covering in the head portion. Head does not undergo. Just this portion is going like this and that. So write down. So actual site of the torsion is neck region behind the head, through which the esophagus, rectum, aorta, visceral nerve loop, and shell, SHELL, muscles pass. That means the twisting process involves the whole body between the head and foot region. चेंज करके लिखो. How torsion occurs, या mechanism या process. How torsion occurs / mechanism or process. The torsion process can be seen in the embryogeny of gastropods, Before torsion, the larva / organism is quite symmetrical. The mental cavity faces backwards and downwards, alimentary canal is straight with mouth and anus at opposite ends of the body. As the anus opens posteriorly in the middle line, stanza change करो. A ventral flexure
दिस इज एक्चुअली द इनिशियल, लाइक जब तक ये वेंट्रल फ्लक्स स्टार्ट नहीं होगा, दिस एलिमेंट्री कैनाल विल नॉट स्टार्ट मूविंग. थिंक लाइक दैट. किसी ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है, हाउ इट विल स्टार्ट मूविंग? लाइक there should be different kind of ventral fluctuation. Fluctuation मतलब a neuronic signals. ठीक है? After the reach, because we know that we have already covered that in the larval development. When the larva is developing into the adult, there's so many changes occur. How the changes will start? कुछ तो होगा ना आपके ब्रेन में. That is why the neuron or the nervous system is very important. That is why it is even found in that start of that animal kingdom. ठीक है? कैसे पता चलेगा that now there is a high time to need to change the such certain, जैसे कि humans में when the puberty hits, it's not only the biological changes, है ना, it actually starts with so many functions, है ना, but that particular kernel, that's why we say that hypothalamus start giving that the gonadal development hormone is also in that brain portion, or that anterior pituitary is also regulating that gonadal development. ठीक है? So similar ventral fluctuation is a kind of neuronic or the nerve signal which just give the signal to start rotating of that alimentary canal. As soon as the alimentary canal will start moving, every single portion around this will start moving. Okay? So underline that a ventral fluctuation of the body results in looping of alimentary canal and approximation of mouth and anus. Shell and visceral mass originally were saucer shaped, saucer shaped, become first cone shaped, and later spirally coiled. Anushka, समझ आ गया? Initially they was very simple. The shell was also very simple in structure in the larval development, है ना? As the rotation will occur, the cell will start the coiling. What is the need to coiled cell? What do you think? क्यों जरूरत है coiled cell की? Simple saucer shape से क्यों नहीं काम चल रहा है? Think of the difference between that simple structure of the cell and the coiled structure of the cell. What will be the significance and what will be the benefit in that coiled structure compared to the simple saucer shaped structure? More space, yes, good. But what is the need for the more space in the shell region? But it's a good answer. But tell me, connect it like that. Good, very nice. Because shell is external covering, right? As it will be rotated, and it will be the more complex also. As it will be the more complex, suppose that you have a single thread. If you all rotate it, the first of all the space, obviously, no doubt about it. Okay? And second of thing, as it will be the more complex, so opening and breaking of the cell, which is a protective organ for the body in the molluscas, it will be more hard or difficult. Okay? So in that process, not only the internal visceral mass or something is changing, but the structure or the composition or that kind of thing is also changing of the shell or the structure. Okay? Chalo, write down. Shell and visceral mass originally saucer shaped, become first cone shaped, and later spirally coiled. Next, shell lies dorsally and forms a coil on the anterior side. Such shell is called exogastric. So everyone must have seen the snail, ठीक है? तो जब उसको when the snail feels threat, तो उसका जो external face होता है वो भी धीरे से उसको क्या करता है? Internal. That means shell having that kind of a space. मतलब अगर suppose है कि normal position होती
तो फिर वो माउथ पोर्शन अंदर नहीं जा पाता, इतना छोटा सा तो ऑर्गेनिज्म होता है, सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन. वेंट्रल स्टैंडर्ड चेंज करके लिखना. वेंट्रल फ्लेक्चर, ventral flexure is followed by a lateral torsion, a lateral torsion, so that the dorsal or exogastric cells, so that the dorsal or exogastric shell become ventral or endogastric, full stop. Lateral torsion is probably due to arrest of growth on one side. ये we were talking about that, right and left side. ठीक है, एक तरफ ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, due to arrest of growth on one side and active extension on the other, and active extension on the other. Generally, first off, generally growth of the right side becomes retarded. Generally growth of the right side become retarded, so that the mental cavity and pallial complex, so that the mental cavity and pallial complex gradually pass round to right side, round to right side. And so to the anterior side, on account of comma करके continue है, and so to the anterior side on account of greater growth of visceral sac, on account of greater growth of the visceral sac towards the left, थोड़ा सा हेडिंग डालूं, stages of the torsion, stages of torsion. Torsion is achieved mainly in two stages. Torsion is achieved mainly in two stages. Stage one, in which stage one dash करके, in which the straight alimentary canal, rotates at 90 degree, from its original position due to muscular contraction and shifting of mantle cavity and position from posterior to anterior end, This process completes in 2 to 3 minutes. In some of the organism. Next, stage 2. It takes the longer duration, such as days. In which the remaining 90 degree angle of rotation
remaining 90-degree angle of rotation takes place due to the irregular growth of right and left side, due to the irregular growth of right and left side in the visceral mass, which forces and promotes this rotation, full stop. इसी में the actual mechanism of torsion, is supposed to be the asymmetrical position, and pull of the larval retractor muscles, asymmetrical position and pull of the larval retractor muscles running from the velar lobes, to the shell. This lateral torsion is second half of 90-degree rotation. The contraction of larval retractor muscles, brings about the rotation or torsion. Full stop. Only narrow neck of the larva is actually standard change कर देना, stage 2 खत्म हो गई है, ठीक है? Standard change करके लिखो only narrow neck of the larva is actually twisted, full stop. Consequently, everything between the head and anus, undergoes an anti-clockwise rotation, slash torsion through an angle of 180 degree, around a ventral axis, in a dorsoventral direction. देखो, in this diagram, although we can see that anterior and posterior, when we do the naming, what we do, this is anterior and this is a posterior, but actually this is not the organism is this, है ना? जैसे कि हमारी body में our stomach region is a ventral position, है ना, and back is a dorsal position. So similar is like that. So ये इसका dorsal position और ये इसका ventral position. Where is the mouth, right? So dorsoventral position इसको नहीं consider करना है. This is a diagram to simply understand that. Either the diagram should be this or the diagram should be this, ठीक है? तो actually torsion जो आपका होता है वो एक straight line tube है और उसमें आपका this is rotating. So this is a dorsal or ventral position, ठीक है? Next I down effect of torsion. Torsion is a heading है ये, ठीक है? Torsion is a fundamental feature of gastropods. And represent their greatest departure from the ancestral molluscan plan.
The peculiarities of torsion, the peculiarities of torsion process in gastropods was first realized by Spengel, Spengel, in 1881. In 1881. Okay. First study round. What is the effect? Okay. If I'll ask Nambi, the torsion process samajh aaya? Anushka, Shiva, online. Manisha and Rohit, everyone. So now we got the process of torsion, right? It's a simple except that head and the anus portion, the whole body is, sorry, not anus, I would say, the foot portion, except that head and foot portion, the between of that structure is rotating. Okay? Suppose that now, itna hi aapko pata hai. So what do you write the effect of the torsion? Kya ho raha hai change? Anushka? First, okay, coiling of that alimentary canal. Shivam? Okay, Tinidia is moving from that backwards to the frontward. That's good. Manisha and Rohit, tell me the one thing. We have mentioned it. Abhi, there is a 2 points which we have already mentioned. In that effect, what is effect before and after torsion? Shell coil हो रही है ना? Coiling of shell हो रही है. Position of anus is changing, right? In the larval development, there must be that simplest type of alimentary canal because it's a straight one, right? In that process of the coiling or the torsion, whatever you say, twisting, better say that. So what is happening as the alimentary canal is twisting? So the development of that more complex alimentary canals also. So first write down the displacement of mantle cavity. Larva say we have talked about that larva to adult development. So in that process of that process, larva से adult बनने में ये चीजें हो रही. No. In the complete adult, this process is not happening. Even in the complete adult, because of course, the evolution is a very complex process. The most complex process in that world is evolution, I would say. So some of that larval, even in the gastropods, which do not survive because of their particular habitat or their kind of feeding or whatever. So there is again detorsion process. अडल्ट में आपका डिटॉर्जन प्रोसेस होता है, लार्वल से अडल्ट बनने में आपका टॉर्जन प्रोसेस, क्योंकि सब लोग कर रहे थे ना. दिस वाज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, राइट शिवम? सब लोग कर रहे थे. सपोज दैट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फॉर द सर्टेन, every kind of organism has started developing the skills so that that temperature will not impact that skin or the epidermis. But at the same time, scaling to develop हो रही थी, but at the same time some of the organism move to that kind of burrow system, है ना? तो स्केल भी डेवलप हो रही है, बरो में भी जा रहे हैं. सो आफ्टर दैट दे विल रियलाइज और द काइंड ऑफ इवोल्यूशन विल एक्सेप्ट कि नो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे कि वेरी गुड एग्जांपल है विद दैट लिम्बलेस स्नेक्स. ठीक है, स्नेक्स के ऊपर एक पतली सी स्केल होती है, मोल्टिंग प्रोसेस दे शो दैट, है ना, रिमूवल ऑफ दैट. बट ग्रेजुअली उनका जो लिम्ब है वो एक जीन होती है, उसके कारण वो रिप्लेस हो गया कि नहीं, ठीक है, इन दैट मूविंग ऑफ दैट. बट क्रोकोडाइल्स and gharials, they have very short legs, but they have a very strong legs. Okay, so पता चलता है ना धीरे धीरे. It's a very long process, millions of years में होगी. जैसे कि देखो ह्यूमन में we know that there are so many organs, vestigial organs जिसे बोलते हैं, they do not have function in our body. जैसे कि tailbone do not have function, है ना, appendix do not have function, but during that evolution of changes कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम कर जाती है. वैसे प्रॉब्लमेटिक है नहीं, बट इट शोज दैट ठीक है हमारे पहले में था तो हम रखेंगे. टॉर्जन प्रोसेस वन ऑफ द वेरी गुड प्रोसेस टू स्टडी द एवोल्यूशनरी प्रोसेस. इनको एक्चुअली वी डू नॉट इवन से दैट दे आर दैट डिसेंडेंट ऑफ दैट ऑर्थोपोड. ऑर्थोपोड इनके पहले एनालीड और मोलस्का में ज्यादा क्लोज रिजेम्बलेंस है कंपेयर टू दैट ऑर्थोपोड एंड मोलस्का. इसीलिए देखो दे हैव द कॉमन लार्वा टू, दैट्स द ट्रोकोफोरा. ओके, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी. Mental cavity was primitively posterior in position. Full stop.
Increase in the length of ventral foot. Increase in the length of ventral foot with the development, comma, tends to remove the mental cavity, tends to remove the mental cavity and pallial complex, and pallial complex away from the head, away from the head. So the after torsion, mental cavity opens just behind the head. Mental cavity opens just behind the head. And its associated parts are also shifted forwards. And its associated parts also shifted forwards. Next, second point. Changes in the relative positions. Changes in the relative positions. Dash. Before torsion. Anus tenidia, CTENDIA. Anus tenidia. Renal orifices, ORIFICES. It's the opening. Okay, renal orifices is actual opening. Okay, renal orifices point backwards, and the auricle line behind the ventricle, Full stop. While after torsion, these all project forward. And auricles lie in front of the ventricle. What will be the significance of the auricles lie in front of the ventricle, while earlier the auricles lie behind the ventricle? Circulation, ऐसे you need to just conclude the something more from your side also. ठीक है, पहले क्या था, auricles जो था ventricle के behind में था, ठीक है, dorsoventrally में. After the torsion क्या हुआ, the auricle comes forward to that ventricle. What क्या ही हो जाएगा, behind कर लो, forward कर लो, what will it make change? Yes, obviously circulation will be more efficient. How? What is the function of the auricle and ventricle? Okay, auricle supply करता है left atrium and left ventricle. Which is supplying? Ventricle is supplying. So ventral is coming close to the body. Dorsal में आपका auricle आ रहा है. अभी क्या है? Auricle is actually taking the blood from the heart system, है ना? हार्ट से पहले आपका जो पहले पड़ेगा उसमें हार्ट से ब्लड आना चाहिए, बिकॉज हार्ट से आपका, बिकॉज इन योर हार्ट देयर इज अ कमिंग दैट प्योरिफाइड ब्लड और द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो जैसे ही आपका टेनिडिया की पोजीशन चेंज हुई, एज अ पोजीशन ऑफ द टेनिडिया विल बी चेंजिंग, इट इज कमिंग टू द फॉरवर्ड पोजीशन. लुक एट हियर. As the position of tenidia will be changing. So now this is this may be properly developed नहीं है. So now what is happening? Close to the tenidia, the first auricle should come, because through the tenidia there is a purification of the blood, है ना? And after that, अभी क्या हो गया? Dorsal पहले, auricle will be the first and ventricle will be the later. Until you are not having that oxygenated blood, how will you transport to the body? So now this is also helping in that circulatory system. While in the larval system it was in a straight line. It does not make any differences because larva does not need any such kind of complications. Okay? Auricles lie in front of the ventricle. Next, looping of alimentary canal. Looping of alimentary canal. The digestive tract
The digestive tract, which was originally straight from mouth to anus, which was originally straight from mouth to anus in larva form, in larval forms, rotate at 180 degree, rotate at 180 degree, so that so that both opening both opening mouth and anus comes at anterior side of the body, come comes at anterior side of the body, and thrown into loop-like structure, and thrown into loop-like structure. The next point is the suppose that you do not know any meaning of this statement. Suppose that you do not know any meaning of this statement. I am not telling anything. Still, what can you think of this word? Neuri, neuron. Something is like the neuron. Okay, right on. Good. Sure. Long, uncoiled, long, uncoiled, pleurovisceral nerve, pleurovisceral nerve, connective tissues, become twisted. टिश्यूज कट कर दो यार, कनेक्टिव है, टिश्यूज कहाँ पे है, सिर्फ कनेक्टिव. Visceral nerve connectives become twisted into the structure of eight लिखना, EIGST नहीं लिखना, 8 बनाना, into a structure of 8. Full stop. Right connective with its ganglions passes over the intestine to become supraintestinal and left connectives passing underneath the intestine. हो गया dorsal ventral. इंटेस्टाइन के एक अबव से जा रहा है और एक बिलो से जा रहा है ना, तो एक डॉर्सल हो गया और एक वेंट्रल हो गया, ठीक है. एंड while left connective passing underneath the intestine to become intraintestinal, Next, endogastric coil. Endogastric coil. Coil of visceral sac, visceral hump, visceral sac, सब कुछ वही वाला organ जहाँ पे visceral sac is the area where all of the important organs are located. Coils of the visceral, उसी के ऊपर जैसे ये आपका स्ट्रक्चर होता है, सारे स्ट्रक्चर आपके इधर ही तो होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, यही तो है सब कुछ स्ट्रक्चर. तो ये आपका विसरल हम्प हो गया, हम्प लाइक लिटिल बिट काइंड ऑफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ना, अपफ्रंट स्ट्रक्चर, एंड दिस इज योर शेल, ठीक है, दैट इज एंडोगैस्ट्रिक सेल. Long coil of visceral sac and the shell which primitively was dorsal and exogastric, exogastric मतलब अनुष्का, what is the meaning of exogastric? Outside. हाँ. Yes, if I'm saying that initially in that larval stages this shell, this external opening was exogastric, what does that mean? Rohit? Yes, what is the meaning of that?
how the exogastric cell is becoming the endogastric cell. So this is the torsion process. So what is actually changing in that process? What is the meaning of exogastric and endogastric? Yes, because of torsion it is happening. That's true. But what actually changes is occurring? Good. Exactly. Just elaborate it. Just complete the statement. Rohit, what it is? Break the word exogastric. You got it. You just need to connect it. Shivam, what is exogastric? There's a proper meaning of it. I'm not asking something confusing. Yes. Hmm. Exogastric. In that, initially it's very easy, guys. Initially the larva, the alimentary canal was straight, है ना? When the alimentary canal was straight like this, shell कहीं पर भी होगी, shell external covering. Exogastric मतलब initially when the shell was exogastric, the gastric portion was not under the shell. Exo मतलब out, gastric मतलब that stomach region. Initially क्या होता था, जो stomach region था वो shell के directly beneath में नहीं आता था because it was straight, it was not well developed. Now the shell is becoming that endogastric. Now that endo मतलब inside, gastric मतलब आपका gut system, that stomach region consistently हम लोग बोलते हैं. Gastric मतलब आपका अभी stomach और intestine region है, वो इसमें क्या हो रहा है? ये आपका अगर shell है और आप अब जो है आपका stomach और intestine जो है वो आप किसके अंदर आ रहा है? Shell के अंदर. समझ आया? Exogastric मतलब simplest type of, because the alimentary canal was simple, related है. धीरे धीरे क्या हुआ, जब when that it is more developing है ना, तो वो proper shell के अंदर आ गया, तो it becomes the endogastric. ठीक है, gastric system is come into that shell के अंदर. That's it. ठीक है, dorsal और ectogastric क्या लिखा है? ये लिखा है ना, dorsal ectogastric. After torsion it becomes ventral or endogastric. Ventral and endogastric. Last point लिखो effect में, loss of symmetry and atrophy. Loss of symmetry and atrophy. अगर आपके पास कभी कभी इट हैपेंस, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, सो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, क्या हो रहा है टॉर्जन में? ये हो रहा है टॉर्जन में. ठीक है, इट इज करेक्ट. राइट डाउन. क्या लिखेंगे लॉस ऑफ सिमेट्री में? गुड. यस, राइट डाउन. लॉस ऑफ सिमेट्री में anus is displaced toward right side, as the anus is displaced towards the right side of the pallial cavity, so that original symmetry of organization disappears. देखो, सबसे आपकी मोस्ट डेवलप होती है बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री अगर रिड्यूस हो रही है, कुछ भी किसी भी लेवल की सिमेट्री आ रही है, दैट मींस अ काइंड ऑफ रिडक्शन, मतलब डिमोशन, प्रमोशन नहीं हो रहा, उसका डिमोशन हो रहा है. दैट्स व्हाट इज नोन एज अट्रोफी. ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखो, स्टैंडर्ड चेंज करके. asymmetry is reducing called atrophy of the paired parts of primitively left or right side of body structure, of primitively left or right side of the body structure. स्टैंडर्ड चेंज करके लिखो, सम टाइम इट हैज बीन आस्क्ड विद द साइंटिस्ट ऑल्सो. स्टैंडर्ड चेंज, ये आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, सपोज दैट इफ द क्वेश्चन ऑफ द टॉर्जन कम्स इनटू 10 मार्कर गाइस. ठीक है, अगर 10 मार्कर में क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट विल बी द हेडिंग? 10 मार्कर में आ रहा है, सिंपली यू विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग व्हाट इज द टॉर्जन प्रोसेस. ठीक है, सेकंड हेडिंग विल बी द सेकंड हेडिंग आप बनाओगे उसमें कि बॉडी बिफोर टॉर्जन. ठीक,
क्या बनाओगे? बॉडी बिफोर टॉर्जन। क्या होगा बॉडी बिफोर टॉर्जन में? वही स्ट्रेट है, सिंपल है, शॉर्टर शेप्ड है ना, टेनिटी की पोजीशन अलग है, मल्टीपल हमने लिखे हुए, जब हमने इफेक्ट लिखे उसमें फर्स्ट पोर्शन जन लिखा हुआ और हमने स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ है। देन आफ्टर व्हाट यू विल मेक द हेडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। एक्चुअली मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? दिस हैपनिंग इन द टू स्टेजेस एंड अ सिंपल मैकेनिज्म। फिर आप क्या लिखोगे? आपका 2 पेजेस मिलते हैं ना 10 मार्कर में, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, बिफोर, यहाँ पे सिंपल डालोगे मैकेनिज्म ऑफ टॉर्जन, या फिर सबसे पहले डालोगे बॉडी बिफोर टॉर्जन 3 to 4 पॉइंट, 4 पॉइंट विल बी गुड इनफ, 4 to 5 पॉइंट विल बी गुड इनफ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैकेनिज्म डालना, 2 स्टेजेस डालना, यहाँ पर आ गए मैकेनिज्म, यहाँ पे लिखोगे। फिर डालोगे बॉडी या इफेक्ट ऑफ टॉर्जन या बॉडी आफ्टर टॉर्जन। व्हेन यू आर राइटिंग द बॉडी आफ्टर टॉर्जन, सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइन लिखना है, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से पहले अगर हो सके तो एक इतने में डायग्राम बना देना, ठीक है। या फिर बिफोर बॉडी आफ्टर टॉर्जन के बाद भी डायग्राम बना सकते हो, या मैकेनिज्म के साथ भी डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम शुड नॉट बी इन दैट जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन, इट शुड बी इन दैट बॉडी। अगर प्रोसेस अगर है, यहाँ पे क्या लिखोगे? आफ्टर द टॉर्जन 3 to 4 पॉइंट, हमने 5 to 6 पॉइंट लिखे, एंडोगैस्ट्रिक शेल लिख देना, मेंटल कैविटी लिख देना, काइजर ट्यूनियर लिख देना, और आपका लास्ट में मेंटल कैविटी लिख देना। 4 पॉइंट लिख लो, 10 मार्कर के लिए सफिशिएंट है। और कंक्लूड कैसे करेंगे? खत्म, ठीक है। बट द टॉर्जन प्रोसेस आल्सो केम इन दैट 15 मार्कर, और उसमें दे विल आस्क यू कि व्हाट इज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर टॉर्जन, ठीक है। तब आप पूरा एलाबोरेट करो। और अगर 10 मार्क में सपोज दैट आपके पास यू थिंकिंग दैट स्पेस कम है, बिफोर टॉर्जन छोड़ दो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ टॉर्जन में जस्ट मेंशन लिटिल बिट कि ये पहले था, ये बाद में हो रहा है, तब ये नहीं लिखना, तब आपकी बॉडी में 2 हेडिंग है। 10 मार्कर क्वेश्चन में 2 हेडिंग विल बी सफाइस। अगर आपके पास और है दैट्स गुड, नहीं है तो 2 हेडिंग विल बी गुड इनफ। बट 2 हेडिंग्स में मैकेनिज्म मस्ट बी एंड आफ्टर इफेक्ट मस्ट बी, क्योंकि बिफोर तो आप मैकेनिज्म में लिख ही सकते हो, है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंस आप कंट्रोल कर सकते हो। डायग्राम शुड बी देयर। अगर पेज लिमिटेशन का प्रॉब्लम है, बिफोर वाला हटा के डायग्राम बना दो, या मैकेनिज्म से स्टार्ट करो, डायग्राम बना दो, ठीक है। चलो 15 मार्कर में देखो क्या ऐड करना है। इन 1958 the scientist named Thomson, Thomson, recognizes the 5 ways in which the torsion can be brought about. First point, complete or 180-degree rotation. Achieved by muscle contraction alone. Is known in archaeogastropoda. Second, 180-degree rotation. 180-degree rotation in 2 stages, occurred in 2 stages, या achieved in 2 stages. इसमें पॉइंट 2 लिखा है ना, सेकंड पॉइंट, इसमें पॉइंट 1 करके डाल दो। फर्स्ट 90-degree रोटेशन मूवमेंट, या फर्स्ट 90-degree रोटेशन by contraction of larval retractor muscles. सेकेंड लिखो, contraction of larval retractor muscle. Second, the remaining half 90-degree rotation by slower differential growth. Process. Full stop. सेकेंड में ही पॉइंट लिखना है, मतलब इस वाले सेकेंड में पॉइंट लिखना है, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड या मैकेनिज्म known today. Example, patella. Patella. Example, patella. एक और हेलियोट्स,
patella and haliodes. Next, third, 180 rotation, 180 degree rotation by differential growth process alone, by differential growth process alone. देखो फर्स्ट और थर्ड कैसे डिफरेंट है, फर्स्ट में सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन था, है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल ग्रोथ है, ठीक है. एग्जांपल वीवा पारा या वाइवा पारा, व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंशिएट. ये सेकंड वन और थर्ड वन, व्हिच पॉइंट? ओके, राइट डाउन. 180 रोटेशन बाय डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस अलोन, मतलब इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंपल डिफरेंट लेवल ऑफ मसल ग्रोथ हो रही है मसल की और उसके कारण शिफ्टिंग हो रही है. एग्जांपल वाइवा पारा, VIVAPARA. फोर्थ, रोटेशन बाय डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस, rotation by differential growth process with NS coming to appropriate position in adult, coming to appropriate position in adult. Example aplysia, हमने इसको बताया था कल, सी हेयर भी बोलते हैं. Example aplysia. Fifth, torsion no longer recognizable, torsion no longer recognizable because it is actually connected with the detorsion process also, ठीक है. Torsion no longer recognizable as a movement of visceropallium, as a movement of visceropallium, comma, as the organs in as the organs in post torsional position as from their first appearance, as from their first appearance. Example adalaria, example adalaria. In that structure you can see every single thing, ठीक है. सिंपलेस्ट ये रहा डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक. ये रही आपकी रिट्रैक्टर मसल्स, ये है, ये जो लाइनिंग दिख रही है ब्लूइश, रिट्रैक्टर मसल्स गिव्स द फर्स्ट सिग्नल टू हैव दैट फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है. अभी देखो सिंपल है, उसके बाद जब रिट्रैक्टर मसल्स एक तरफ स्प्लिट करती हैं तो आपका ये ऑर्गेनिज्म था, तो दिस वाज योर ऑर्गेनिज्म लेफ्ट एंड राइट. Retractor muscles from that right side stretches a little bit, that is called that ventral flexure. मसल को सिग्नल देंगी, ये आपका 90 डिग्री रोटेशन स्टार्ट. आफ्टर द 90 डिग्री रोटेशन द सेकंड जो हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेकंड में आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट इज डेवलपिंग मोर देन दैट 90 डिग्री देन दैट राइट. सो ये इसको और पुश करेगी, पुश मोर, ठीक है. सो नाउ इट इज योर कंप्लीट, बट दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. देखो नर्व सिस्टम ये है, एक आपके ये आपका वो है स्टमक और इंटेस्टाइन, एक इसके अपर से जाएगी दैट इज सुप्रा एंड एक इसके बिलो से जाएगी दैट इज. डायग्राम कौन सा बनाना है आपको, ये आप बता दो. कोई भी डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम शुड बी रिप्रेजेंटेटिव एनफ टू टॉक अबाउट, टू अंडरस्टैंड. देख लो ये वाला बनाना है, ये भी इजी है, और ये वाला बनाना है, ये भी इजी है. ये बनाना होगा तो दोनों बनाने होंगे. कौन सा बनाना है, अभी बनाना है, बट अभी ये बनाना, ये ठीक है, इजी है. Make it continue fast.
ओके आप लोगों का, तो ये भी एक डायग्राम है। अनुष्का, एक्सोगैस्ट्रिक बिल्कुल नहीं है ना? ये जो आपका गट सिस्टम है वो शेल के अंदर नहीं है। इसमें देखो गट सिस्टम प्रॉपर आपका शेल के अंदर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इजी डायग्राम। इसमें सिर्फ आपको एक गट सिस्टम, ये आपका गट सिस्टम है, ये आपका वेलम है। फूड कंटिन्यूसली, ये माउथ की पोजीशन देखो हमेशा वेलम के जस्ट बगल में फिक्स्ड है ना? रोटेट कौन से कर रहा है? एनएस वाला रीजन, ठीक है? चलो, वेलम का एक्चुअली एग्जैक्टली कोई फंक्शन नहीं है। वेलम एक्चुअली इस पे रिसर्च भी सपोर्ट सिस्टम है फूड के टाइम पे। मतलब एक तो एक इसका कीमोरिसेप्टर का भी फंक्शन है, वेलम का ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम फूड के जगह पे इसको अगर कहीं क्योंकि लोकोमोशन इसमें होता नहीं है और ये पाया जाता है नीचे फूड के पोजीशन में। सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्जन, सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्जन। According to Garstank, according to Garstank, Tang, according to Garstank, in 1928, इन 19 इसीलिए वेलम कहीं पे डेवलप भी नहीं हो रहा है। लार्वल में तो थोड़ा बहुत यूजफुल भी होता है, अडल्ट में ऐसा कोई यूजफुल नहीं, ठीक है? वेलम की देखो पोजीशन स्टेट अवे वहीं पर। गास्टैंग, टॉर्जन फर्स्ट अकर्ड एज अ लार्वल म्यूटेशन, टॉर्जन फर्स्ट अकर्ड एज अ लार्वल म्यूटेशन of advantage for adapted to pelagic life, for adapted to pelagic life, but little use in adult, but little use to adult. Next, before torsion, more complex body. Before torsion,
the untwisted and simple structure, the untwisted and simple body structure of swimming larva, of swimming larva fell, fell, an easy victim, fell, an easy victim to its predator, to its predator, as a posterior mantle cavity, as a posterior mantle cavity, delicate, delicately receive the head and velum, the head and velum only after, only after the foot was inside, the foot was inside. So the sensitive part, so the sensitive part, foot, so the sensitive part, that is head and velum, head and velum could withdraw first, could withdraw first, followed by the foot, followed by the foot. Operculum, full stop. Operculum sealed the aperture. Operculum sealed the aperture. And velum stopped beating. And velum cilia, actually, velum cilia stopped beating. So that larva, so that larva fell to the sea bottom and avoids its enemy. And avoids its enemy. Next, according to Morton, stanza change करके रखना. According to Morton, in 1958, in 1958, the main advantage of torsion is for the adults, is for the adult, as it promotes stability, as it promotes stability in the adult, in the adult, by placing bulky mass of animal, bulky mass of animal near the substratum, near the substratum. Second, in primitive mollusks, in primitive mollusks, the mantle cavity containing the gill, the mantle cavity containing the gill was situated posteriorly, was situated posteriorly. So the water flow, the water flow and the current and the water current and the water current due to movement of animal, due to movement of animal opposed the respiratory current, opposed the respiratory current entering the mantle cavity, entering the mantle cavity. From behind the animal, from behind the animal. Look at it here. देखो इनिशियल पोजीशन में ये है आपका गिल, है ना, और एनिमल ऑलवेज मूव्स एंटीरियरली. तो सोचो अगर गिल की, थिंक लाइक दैट, इफ द पोजीशन ऑफ द गिल इज लाइक दैट, so if it is moving like that, इससे तो what, where should be the position of gill, where it will have that more surface area, है ना.
वॉटर, आप भी ऐसे मूव कर रहे हो, गिल भी ऐसे मूव कर रहा है, वाटर क्या होगा, द करंट और द वाटर लेयर विल पास इट, है ना, एंड फेसिंग वेरी लेस सरफेस एरिया, बट व्हेन इट्स पोजीशन विल बी हियर, है ना, द एनिमल मूविंग इन दैट डायरेक्शन, मोर वाटर करंट विल कम हियर, है ना. सो सपोज दैट अगर यहाँ पे कुछ, इफ देयर समथिंग इज हियर, सो यहाँ पे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इट विल इधर भी, सो इट विल हैव द मोर सरफेस एरिया, सो दैट मोर ऑक्सीजनेशन विल, मोर ऑक्सीजन कैन एंटर, बट इफ इट विल बी हियर, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, है ना. तो सरफेस एरिया, द पोजीशन ऑफ नीड, द पोजीशन ऑफ गिल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द टॉर्जन प्रोसेस. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उसमें डायग्राम नहीं बनाया है, ऐसे बनाया होगा, ये डायग्राम बनाया है ना, तीन इंडिया की पोजीशन एंड आफ्टर दैट ये चेंज किया. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ऐसा नहीं है कि वट एवर द लैंग्वेज यू आर राइटिंग इन योर नोट्स, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस अगर आपका नहीं आ रहा एग्जैक्टली 4 to 5 पॉइंट, यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दैट पोजीशन ऑफ नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन दैट लार्वल स्टेज टू द अडल्ट बॉडी, बिकॉज लार्वल में ठीक है जितनी रिक्वायर्ड उतनी ठीक है, बट अडल्ट हैज अ मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी, सो इट इज रिक्वायर्ड मोर. ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं जा रही है, ठीक है, जा रही है ऑक्सीजन, बट कंपैरेटिवली लेस इन दैट एरिया, इन दैट डेवलप्ड स्टेज. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मीडिया और द गिल्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द torsion process. If you do not want to write like with respect to the scientist name, you can simply write like that, the evolutionary or the development process. ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, we have already discussed it. Water flow and the current during opposed the respiratory, क्या लिखा है? Okay, from behind the animal. After torsion, as a mental cavity curved anteriorly, after torsion, as a mental cavity curved anteriorly. So now the position of gills, actinidia change, and increasing the surface area with water flow. With water flow. Molton में second में third लिखना. Increasing the surface area for water flow and its ventilation. And increasing its ventilation. Third, anteriorly placed chemoreceptive organs. Anteriorly placed chemoreceptive organs. Bracket या slash में ospharia. Ospharia. Ospharia can also continuously sample the sediment and incurrent water stream. Sample the sediment and incurrent water stream. इतना sufficient है torsion process के लिए. ठीक है, now make the heading detorsion process. Now make the heading detorsion process. Detorsion process is a reversal of the torsion process. The torsion process it can be occur completely or at certain extent. It can be occur completely or at certain extent. It is a characteristic feature. It is a characteristic feature of the group Euthenura animals. First off, as a result of detorsion process, the pallial complex travel back towards the posterior end
The pallial complex travels back towards the posterior end along the right side, along the right side, comma, और क्या होगा? टेनिडिया मूविंग बैकवर्ड्स, ठीक है, राइट डाउन, टेनिडिया पॉइंटिंग बैकवर्ड्स, और क्या चेंज हुआ था? ऑरिकल का भी चेंज हुआ था ना, ऑरिकल मूविंग बैक टू द वेंट्रिकल, ऑरिकल मूविंग बैक या बिहाइंड विद वेंट्रिकल, कॉमा, और क्या हुआ था? विसरल लूप, सिमेट्री तो अल्टीमेट रिजल्ट है ना, विसरल लूप, गुड, becomes untwisted, visceral loop become untwisted, resulting change in symmetrical, resulting change in symmetrical organization of animal or organism. ठीक है, full stop. In this way, the secondary external symmetry is re-established. The phenomenon of torsion can elaborated as the phenomenon of torsion can be elaborated as first, in some cases, the right ctenidium bracket में originally left and the osphaeridium are absent, second, in eolis EOLIS, in eolis dash the veliger larva with a coiled visceral hump that undergo torsion but adults do not show any sign, of it. That means partial है, because pallial complex posteriorly placed in adult, as a pallial complex posteriorly placed in adult. Third, in pulmonata, the pallial complex is shifted, but there is no chistonury, as it secondarily lost, मतलब ये 3 पॉइंट आर शोइंग दैट जरूरी, देखो टॉर्जन का प्रोसेस इज फिक्स बट डिटॉर्जन का प्रोसेस इज नॉट फिक्स्ड, है ना. सपोज दैट व्हाटएवर द टॉर्जन प्रोसेस अकर इन सम ऑफ दैट पैलियर कॉम्प्लेक्स विल बी डिटॉर्स, इन सम ऑफ दैट विसरल नर्व विल बी डिटॉर्स, है ना, कंप्लीट नहीं होता. इन सम ऑफ द यूथिन्यूरिया में कंप्लीट डिटॉर्स है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कंप्लीट आपके रिवर्सल हो जा रहे हैं, सो सिमेट्री विल बी अगेन रीएस्टैब्लिश्ड. बट एक्सेप्ट इन दैट यूथिन्यूरिया सम ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म वी विल मेंशन इट,
उसमें कुछ कुछ पार्ट, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिटॉर्जन. ठीक है, स्टाइल चेंज करके लिखो. In such organism, in such organism, torsion must be disadvantage to adult snails. Torsion must be disadvantageous to adult state as they undergo as they undergo various degree of detorsion, various degree of detorsion. Full stop. Such as such as in ophistobranchia, such as in ophistobranchia, and pulmonata, and pulmonata. The detorsion, the detorsion is not complete, is not complete. So the visceral loop, so the visceral loop remains partially twisted, partially twisted, and the anus antenedium, and the anus antenedium are directed laterally, are directed laterally. Full stop. Total detorsion shown by aplasia, total detorsion shown by aplasia, which accompanied with which accompanied with reduction of reduction or disappearance of the cell, reduction or disappearance of the shell, as अल्टीमेटली देखो आपका जो एप्लाइसिया है उसमें कंप्लीट डिटॉर्जन शो कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली द कंप्लीट डिटॉर्जन वो शो कर रहा है तो उसमें शेल भी हट जा रही है. समझ आ रहा है ना? जो बॉडी की शेल है वो कंप्लीटली लॉस्ट है, इसमें लार्वल स्टेज में थोड़ी बहुत होती भी है. दैट मींस व्हाट वी कैन कंक्लूड इट इन दोज एनिमल्स इन व्हिच द टॉर्जन विल बी कंप्लीट रिवर्सल, है ना? द शेल विल आल्सो बी कंप्लीटली लॉस्ट बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ द चेंजेस, माउथ की पोजीशन फिक्स्ड है, वेलम की पोजीशन फिक्स्ड है, एक्सोगैस्ट्रिक से एंडोगैस्ट्रिक सेल हो रही है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट आपका गट सिस्टम. तो अगर आपका शेल ही हट जा रहा है दैट मीन्स आपके सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कॉम्प्लिकेटेड होने की या कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है. अगर वो सिंपल ही रहेगा तो वो उसको एडजस्ट होने ही नहीं पड़ेगा शेल में बिकॉज सेल हैज ऑलरेडी लॉस्ट. ठीक है, इसी में लाइन लिखो, इसी वाले में अप्लाइसिया वाले में. once the shell is lost once the shell is lost even initially when we talking about that position of gills, so position of gills जब आपका posteriorly था and after it is shifting, suppose that अगर gills lost हो जाएगी, है ना, तो ये जो आपका इंडिया का पोजीशन है, it is facing that more oxygen from everywhere, तो इसका भी चेंज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, right on. Once the gills is lost, when the cells is lost, the position of when the cells is lost, gills become exposed to external currents. Once the shell is lost, gills become exposed to external current and their anterior position will have no advantage, right? And their anterior position will have no advantages. So yeah, therefore the mental cavity and the pallial complex, therefore the mental cavity and the pallial complex shift back to their original position posteriorly. ठीक है, समझ आ गया?
Detorsion and torsion process खत्म. Detorsion के भी अपने significances हैं. In that evolutionary development, it was not required. ठीक है? Because such organism, all the mollusca do not contain the shell, of course. So such organism which were not requiring the shell. If they were not requiring the shell, that means they do not have that bulky body, so that maybe they can move also. ठीक है? Ultimately, these kind of gastropods, that is, will not having the torsion or the detorsion. ठीक है? चलो. अब हम लोग क्या करेंगे? राइट डाउन फीडिंग. उसका लार्वा तो कोई पूछा भी नहीं गया है. श्योर श्योर. Migdating, feeding in molluscas. Feeding in molluscas. Molluscas are the second largest phylum after the arthropod. Molluscas are the second largest phylum after the arthropods, which shows the diverse habitat and feeding pattern according to their different adaptations, which allow them to feed in variety of ways as they are living in fresh water, marine habitat, terrestrial or land region, which require different feeding strategy, to survive in the environment and the life cycle. First, herbivorous. Many gastropods such as snails and limpets, which feed on algae, phytoplanktons, and biofilms on the surface, having primary feeding organ is radula, which help in scrapping / cutting of the food before ingestion in digestive system.
before ingestion in digestive system. Second, carnivorous feeding. Second, carnivorous feeding slash predatory in nature. Slash predatory in nature. Generally, molluscas, molluscas which are carnivorous, are active predators. Are active predators such as squids and octopus. Such as squids and octopus. That means they are fast moving organism. They are fast moving organism. Full stop. According to their predator habit. According to their predator habit. They have specific structure slash glands as secretory glands which secrete, which also known as ink gland, which secrete specific blue fluid in the water, to neutralize, capture their prey, and also protect themselves by such secretion to their predators. Full stop. In the digestive canal, radula is present, which breaks food into a smaller one, which breaks complex food into smaller particles, and further digestion process continues. Third, filter feeding. In some bivalves, such as clams, oyster, and mussels, MUSSLES, and mussels. So when we were doing that classification, if you guys have seen that lecture, so this is the only class where the radula is absent. Write it down. Generally, the radula is absent or lacking. Instead, they draw in water. And incurrent water canal, enriched with food particles, enters in their body,
and exit through excurrent siphon. Excurrent, SYPHON, siphon. Full stop. This mode of feeding, this mode of feeding plays important role या significant ecological role in maintaining nutrition and water quality. In maintaining nutrition and water quality. फिल्टर फीडर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि what they generally with the if something is entering through the water current which will be very small, ठीक है, so that's why radula is not necessary in that organism, ठीक है. Next, deposit feeding. Deposit feeding. Some molluscas belonging to the class bivalve and gastropods. Belonging to the class bivalve and gastropods feed on the deposition of organic matter in sediment form full stop. They ingest and digest what do you think, which kind of digestive system will be in that kind of deposit feeding? A well developed or less developed? Less developed. Why, Shivam? Deposited. Okay, Anushka, why? What is the less developed or the more well developed? Which kind should be there? दो ही ऑप्शन है या deposition is already there, so there will be less developed, right? Rohit and Manisha, which kind of like less developed or well developed type of system of alimentary canals should be there in that deposit feeders? Okay, Rohit. No, not guys, not less developed. It should be the well developed. Less developed क्यों होगा? Fresh थोड़ी है ना? There is already deposit है. The deposit can be hard enough. Don't you think so? Deposit can be of various things. Maybe it can be the organism dead body. Maybe it can be anything, right? Because they are the deposit feeder. And before that, they are deposits कहाँ पर होगा? Current पे तो होगा नहीं. It must be that below, है ना? So below के जो organism होंगे या कहीं पे भी suppose that deposition की अगर जगह छोड़ देते हैं, so fresh खाना खाने में ज्यादा हिम्मत लगती है या फिर सब बासी खाना खाने में ज्यादा हिम्मत, है ना? Deposition should be there. That means it become little bit hard enough to the digest. ठीक है, less developed नहीं है यहाँ पे, well developed. Write down. Specifically bivalve feed on the deposit of organic matter in sediment form. They ingest and digest these organic particles with developed digestive system as they feed on dead organisms. They feed on dead organisms and work as detrivorous and help in environment cleaning. Next, fifth, the parasitic feeding. अनुष्का, इसमें कैसा होगा? इसमें less developed होगा ना, because in whatever the organism they are living, है ना, it is already the digested part of that. Either they are living on the blood or something like that. Parasitic feeding. This type of feeding
this type of feeding in mollusk, like bivalve and gastropods, like bivalve and gastropods, depends on other organisms as host, as host for the nutrition, for the nutrition by attaching with them, by attaching with them. Generally, they are ectoparasites in nature. Generally, they are ectoparasite in nature, comma, in marine habitat, in marine habitat. रेड्यूला कैसा होगा? जब digestive system less developed तो रेड्यूला तो less developed होगा ना. Radula is in a rudimentary form. Radula is in rudimentary form. Small body shape. Small body shape with reduced or less developed digestive system. With reduced or less developed digestive system. Sixth, suspension feeding. Sixth, suspension feeding. Similar to the filter feeder. Similar to the filter feeder. But these organisms involve, but these organisms involves the trapping of the suspended organic food particles. The trapping of the suspended organic food particles. Not in IAS, but IFS has been, the question has been asked the filter feeder mechanism. Simple. They did not ask specifically any organism. So whenever we will talking about that any organism in which the filter feeder, generally they will be that swimmers. Generally, ठीक है? Because filter feeding, what is the filter feeding? तो fresh जो आपका water body है, ठीक है? जो भी आपका filter feeding mechanism show करेगा, in which that organism is actually ingesting the water directly from the body, directly from that water feeder. They do not have anything specific developed, the you know they do not have a specific developed the mouth or that. They just have that एक opening होगी body में. In mollusk that is called the siphon, through which the whatever the water current is not entering specifically, but the water current is flowing. Because of the flowing water current, an organism is the swimmers and that suspended in that form. Okay, so that water current is actually enriched with the food particles. Because देखो मैक्सिमम न्यूट्रिशन कहाँ पर होते हैं? आपके सरफेस पे ही होते हैं, कुछ भी जा रहा है. इवन द गुड वार्मथ वाटर इज आल्सो ऑन द सरफेस. सबसे ज्यादा आपका सरफेस वाटर तो गर्म रहता है ना. तो यहाँ का जो भी ऑर्गेनिज्म है, सो दैट इट इज कॉल्ड द एनरिच्ड फूड, एनरिच्ड वाटर करंट जस्ट एंटरिंग इन दैट बॉडी. किसी भी आपकी फिल्टर फीडिंग में बेसिक कोर आपका ये है, फिर उसके साथ आप एग्जांपल के साथ कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक, राइट. ऑन डिपॉजिट फीडिंग में sessile mollusk, sessile mollusk like mussels, like mussels. ये हो गया फिल्टर फीडर. सस्पेंडेड फीडर की जो यहाँ से सस्पेंड होके, मतलब सस्पेंड होके मतलब नीचे फिल्टर आउट होके नीचे जा रहा है. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उन्हें हम लोग सस्पेंडेड फीडर बोलते हैं. तो दे हैव टू हैव यूज द टेंटिकल्स. एक गेम आता था पहले, ऊपर से कुछ तो ब्लॉक करता था एंड वी हैव टू मूव द रोबोट लाइक दैट. So that means it need to develop a little bit compared to the filter feeder. They need to develop a specific kind of tentacles to catch that suspending food particle. That's it. Okay. Sessile mollusks like mussels use tentacles slash gill cilia to capture the suspended slash floating food particles in the water current. Floating food particles in the water current. So the bivalve gills,
are modified and helps in capturing the suspended particles full stop. Generally they are stationary organism as developed tentacles are present. Generally they are stationary organisms as tentacles are present to capture the food. Next, last, grazing feeding कहाँ पर होंगे ये? Example, snails, है ना? Grazing feeding, they feed on vegetation typically present in burrowing habitat or found beneath the holes Full stop. Some of the gastropods, limpets use their radula होगा अनुष्का, use their radula to graze on the food particles. देखो काउस की टीथ वेल डेवलप्ड होते हैं, है ना, ग्रेजिंग में हेल्प करते हैं लाइक दैट, टू ग्रेज on food particles such as algae, lichens, which grow on terrestrial surface or hard surface या land surface, which grow on terrestrial surface / hard surface or land surface. Full stop. Some of the limpets also known with this feeding style in intertidal zones and play important role in the growth of algae. And play an important role in regulating growth of algae. बहुत ज्यादा algal bloom भी नहीं होना चाहिए, right? Otherwise the sun का जो light का penetration है, we know that algal bloom, we know that the condition है eutrophication. ठीक है, चलो. So your torsion detorsion is completed, your feeding habitat is also completed. इससे ज्यादा आपका सीधे पाइलोरस सेल है. ठीक है, देखते हैं कल, otherwise we will start that economy. ठीक, कोर समझ आ गया. ओके, थैंक यू.